Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So children, since we are talking about animals, okay, let's talk about it in more detail now. Let's talk about the habitat of animals in this chapter. Habitat matlab the place or the surroundings in which they live. Okay, I know dash and dash lives in water. So mention what lives in water, okay? And dash lives in desert. Who lives in desert? I know. Alright, so children, animals are found everywhere. They live on land, they live in water, and both on land as well as in water. The surrounding area or the environment where particular animals live and grow is called its habitat. A habitat can be as big as forest or as small as a pond. सो एनिमल्स जो रहते हैं अलग अलग एरिया में रहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जो सराउंडिंग एरिया है उसको कहलाते हैं हैबिटेट. ओके, और ये बड़े बड़े फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं या फिर छोटे से पॉन्ड में भी रह सकते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ लैंड एज वेल एज वाटर एनिमल्स. ओके, ईच habitat has its own features and conditions such as a suitable kind of weather, soil, availability of water, etc. The animals that stay in a particular habitat have an ability to adapt or adjust themselves in that habitat. An adaptation is the way an animal's body helps it to live in its particular habitat. So बच्चों, ये habitat मतलब क्या है कि animals, certain animals can live in certain way, okay, or in certain climate only. सारे एनिमल्स, सपोज एक्सट्रीम विंटर है, सारे एनिमल्स एक्सट्रीम विंटर बेयर नहीं कर सकते. ओके, सारे एनिमल्स एक्सट्रीम हीट बेयर नहीं कर सकते. सो दे लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट एज पर द वेदर कंडीशंस, एज पर द सॉइल, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. उसके हिसाब से वो अपने अलग अलग एरियाज में वो रह सकते और बढ़ सकते. ओके, नाउ an adaptation क्या होता है? It is the way an animal's body helps it to live in a particular area. Okay, अभी ये different habitats के हिसाब से animals are put into following groups: land or terrestrial animals, water or aquatic animals, and arboreal animals and amphibians. चलो अब एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं. लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? दे आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. ओके, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Wild animals that live in jungles, grasslands or mountainous regions find natural shelters. Lion, tiger, bear, etc. Where do they live? They live in caves. Caves of lions and tigers, they are called dens. And some animals live underground, okay, that means they have burrows or holes, they live in that. Rabbits, groundhogs and mongoose, कहाँ रहते हैं? They live in burrows. And snakes live in holes in the ground. Ants, they live in ant hills which are made of mud. तो आप देखोगे कभी कभी आप देखोगे रोड साइड पे ऐसे एक छोटा सा हिल बना हुआ होता है जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंट्स. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग नियर द पार्क और any area where there is mud, because these animals, if they are these ants, if they are red color, they will bite you. Okay, so you have to be very careful. These ant hills, they have special rooms where food is stored. Some animals like elephants, giraffe, zebra, etc., they take rest under the trees. ओके, सो बच्चों ये अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं. अलग अलग एनिमल्स, लैंड एनिमल्स के जो घर होते हैं उनको अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं. जैसे लायन, टाइगर, बेयर कहाँ रहते हैं? केव्स में रहते हैं. ओके, गुफा जो होती है वहाँ पे रहते हैं. फिर दे आर कॉल्ड डेंस. ओके, फिर रैबिट्स, ग्राउंड हॉग्स या मंगूस कहाँ रहते हैं? बरोज में रहते हैं. एंट्स कहाँ? एंट हिल्स में. ओके, और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट्स, जिराफ, ज़ीब्रा, ये जनरली ट्रीज के नीचे रहते हैं. ऑलराइट, द आर्कटिक इज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. Animals like polar bear that live here can survive long winters and very cold temperatures.
They are good swimmers and can walk on thick ice because their feet, okay, have hairy, non-slip soles. The female gives birth inside a den, okay, dug into a bank of snow. तो ये जो पोलर बेयर होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर्स में, ओके, जहाँ पे बहुत सारी आइस होते हैं, बहुत सारा स्नो होता है, वहाँ पे रहते हैं, ओके, और एंड वो अच्छे से स्विमिंग कर लेते हैं, ओके, दे आर गुड स्विमर्स. एट द सेम टाइम उनके पैर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना है, उनके पैर जो होते हैं वो थिक आइस पे भी वो यूज़ कर सकते हैं, ओके. देयर फीट, उनके फीट पे हेयर होता है, बहुत सारे बाल होते हैं, एंड दे कैन नॉट स्लिप, उनके सोल होते हैं ना, दे आर नॉन स्लिपरी, ओके. द फीमेल गिव्स बर्थ इनसाइड अ डेन, डेन के अंदर रहते हैं, और वो जो डेन होता है वो स्नो बैंक पे होता है. Some animals escape unfavorable conditions like by being inactive or by sleeping through a season. When animals sleep through the harsh winter conditions and become active in summer again, it is called hibernation. So कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, जैसे विंटर क्लाइमेट, बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो पूरे विंटर्स में सोते रहते हैं. Okay, that is that process of sleeping, going into deep sleep during winters and then coming back to life and being normal back in summers is called hibernation. Okay, bears hibernate in winters. When animals sleep through or become inactive in summer to avoid harsh conditions and become active again in winter is called estivation. Okay, जब वो winters में सोते हैं और समर्स में एक्टिव होते हैं वो होता है हाइबरनेशन, और जब वो समर्स में सोते हैं और विंटर्स में एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो होता है एस्टिवेशन. ओके, मैनी डेजर्ट एनिमल्स अंडरगो एस्टिवेशन. वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर, ओके, तो डेजर्ट एनिमल्स जनरली एस्टिवेशन करते हैं. We build shelters for domestic animals. We keep sheep and goats in farms. We build sheds for cows and buffaloes. We keep horse in a stable. Dogs and cats live with us in our homes as pets. We make kennel for dogs. Hens and ducks are kept in a coop. तो ये है हमारे फार्म एनिमल्स. ओके, फार्म एनिमल्स को हम जनरली फार्म्स पे रखते हैं. दे आर यूजफुल टू अस. ओके, तो हॉर्स का जो घर होता है उसको कहलाते हैं स्टेबल. Okay, dogs and cats, they live inside the house, but dog's house is known as kennel. Okay, and hens and ducks, they are kept in a coop. Animals like fish, dolphins, whales, seals, walruses, etc., which live in water, they are called what? They are called aquatic animals. So look at these different houses. Now, cow in shed, cow shed, horse in stable, dog in kennel, and hen in a coop. All right, water or aquatic animals, let's talk about them now. Okay, some types of fish live in fresh water, rivers and lakes. Some types of fish live in the salt water like oceans and seas. Some types of fish take shelter in the corals. Some make their home among the underwater plants, while others like starfish live under rocky areas. Fish breathe in air dissolved in water through a special organ called the gill. So, अलग अलग फिश जो होते हैं अलग अलग एरिया में रहते हैं. कोई फिश होते हैं जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं which live in rivers and lakes. कोई कोई फिशेस रहते हैं सी वाटर में, ओके, लाइक ओशंस एंड सी में. सम फिश कोरल्स के बीच में रहते हैं. ओके, some fish they make their homes under the water, under the underwater plants. Okay, फिर starfish जो होता है जनरली उसका जो घर होता है वो होता है रॉकी एरियाज के नीचे वाले साइड में. अब ये फिश जो है दे ब्रीथ एयर थ्रू दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू अ स्पेशल ऑर्गन. ओके, तो उनका ब्रीदिंग ऑर्गन होता है gill. Like we have lungs to which help us to breathe, वैसे ही fish breathe through their gills. Okay, dolphins and whales, they do not have gills. They come to the surface of the water to breathe. आप देखोगे whales and dolphins, they are continuously jumping over water. Okay, leaping over water. That is to they come out to breathe. All right.
Some aquatic animals like octopuses live under the rocks at the bottom of the sea. Crabs and turtles have shells on their bodies. They withdraw into their shells when they sense danger. They are usually found near the seashore. They make holes in the sand or live under the rocks. Walrus lives in the cold sea of polar region and migrates to land to give birth to its young ones. Okay? तो crab और turtles के body के ऊपर क्या होता है? Shell होता है. Okay? और फिर वो जब danger sense करते तो वो अपने आप को ऐसे shell के अंदर फिर से घुसा देते हैं. Okay? और they hide inside the shell. And ये generally आपको कहाँ दिखेंगे? Near the seashore. Okay? अब वो क्या करते हैं, जो लैंड होता है रॉक के आसपास का जो लैंड होता है या सैंड होता है उसके यहाँ पे वो होल्स बना के अपना घर बना लेते हैं. सो इफ़ यू गो टू प्लेसेस लाइक बीच प्लेसेस एंड ऑल, आप देखोगे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे आपको. उन होल्स के अंदर क्रैब्स रहते हैं. ऑलराइट. वॉलरस लिव्स इन द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन. ओके. और यहाँ पे वो क्या करते हैं, जब उन्हें बेबीज पैदा करने होते देन दे माइग्रेट. ओके. एंड गिव बर्थ टू द यंग वंस. ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन लैंड एंड इन वाटर, दैट इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्या होते हैं? दे आर द एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. Animals like frogs, toads, salamanders, newts, etc. They live both on land as well as in water. These animals are called amphibians. They have lungs to breathe on land, while in water they breathe through their skin. उनका skin जो होता है moist होता है, which helps them to breathe in water. Okay. Crocodiles and alligators, they are called reptiles. They breathe through their nose and that is why they keep their heads above water while swimming. Okay. Now, there are nocturnal animals. Who are these nocturnal animals? They are the animals जो रात को जागते रहते. Okay. Desert animals are often nocturnal. They sleep during the day. This helps them to escape the extreme daytime heat. Some nocturnal animals like owls, lemurs and cats, they have special eyes that see well in the dark. Owls and bats move out at night to look for food. Hamster and guinea pigs are examples of nocturnal animals. They live in burrows during the day and they come out only when it is dark. तो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं वो पूरा दिन सोते रहते हैं, रात को वो जाग जाते हैं. ओके. दे कम आउट एट नाइट मेनली बिकॉज टू अवॉइड द क्लाइमेटिक कंडीशन और मे बी टू लुक आउट फॉर फूड एट नाइट दे कम. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडर्स वेब. Spiders spin their own web and use it to catch their prey. The web is made up of type of silk that comes out from a spider's stomach. The silk comes out in the form of liquid but solidifies once it comes in contact with the air. तो आपने स्पाइडर का नेस्ट वेब तो देखा ही होगा आपके घर पे. ओके. जाला जो होता है. सो दिस वेब जो होता है इट इज़ लाइक एक उनके पेट में से, स्पाइडर के पेट में से एक टाइप ऑफ सिल्क कम्स, अ टाइप ऑफ थ्रेड कम्स थ्रू विच ओके इट फॉर्म्स. ओके. द सिल्क कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके. और लिक्विड का जो होता है वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है it becomes it changes into a solid and that's how that web is knitted. Okay. Let's talk about beehives. Okay. Like ants, bees too are social animals. It means that they live together in beehives. Bees build beehives as its shelter. They also store honey in the hive. आप देखो, एक तो bees they live in a group. Okay. बहुत बड़ा झुंड होता है उनका. And never go near the beehives because अगर आपने beehive को छेड़ दिया, all these bees will come and attack you together. Alright. So do not touch any beehive. Now find out which are some other insects that live together in a group just like the honeybees. Okay. Let's talk about bird's nest.
So we have spoken about the land animals, we have spoken about water animals. तो अब बारी आती है about these aerial animals or these animals that fly. Okay, let's talk about birds. Birds nest. Birds make nests to lay their eggs and to raise their young ones. Birds use strong grass, straw, wool and string to build nests. Some build their nest on the ground while others dig holes in the ground and lay their eggs. Woodpeckers use their strong beaks to make holes in the tree trunks to make nests. Weaver birds make hanging nests with the help of grasses and twigs. Birds like nightjar, cuckoo and cowbird, they do not make their nest. ये बड़े आलसी होते हैं birds, okay? They don't want to put in efforts to build their nest. तो वो क्या करते हैं? वो जो है ये birds, they lay their eggs in some other bird's nest. तो that bird जहाँ पे उन्होंने nest अपने अंडे डाले हैं जिनके nest में, that bird takes care of them. Alright? Now, let's look at the different types of nest. Okay, birds के nest जो है, एक होता है pigeon का nest, दूसरा है woodpecker का nest. Woodpecker का nest कहाँ पे होता है? Generally inside the bark of the tree. Tree trunk में होता है. Woodpecker की जो चोंच होती है उस पे वो peck करके tree को peck करके hole बना देते हैं और उसके अंदर अपना nest बना देते हैं. Okay, weaver bird जो होता है वो अपना nest खुद weave करता है. Alright? So children, do it yourself. Make a chart or table as shown below. Write the names of animals and their respective shelters. Now remember, the surrounding area or the environment where particular animals live and grow is called habitat. And adaptation is the way an animal's body helps it to live in its particular habitat. Based on different habitat, animals are divided into different groups. Nocturnal animals are more active at night. Word bank. Okay, let's look at the different words. Burrow. Burrow is a hole in the ground. Cave is an underground chamber on a hillside. Web is a network of fine threads made by a spider. And nocturnal means active at night. Alright, so children, I hope now you know where different animals, birds or insects they live. Alright, so reread this chapter and do the back exercises quickly.